Their body have segmentations, but those segmentations are externally. Okay, now the body is covered externally with exoskeleton as well, and the body is divided into three regions: head, thorax, and abdomen. Most of them, which are insects, basically have 3 pairs of legs and 2 pairs of wings, and about 95% of these animals are insects. So we have given the examples as well. Insects, crab, prawn, scorpion, etc. are the examples of arthropoda. Now we are going to see one of their group, that is insects, class Insecta. Or sometimes they can ask you about Insecta, the special character of insects, okay? And sometimes they can ask you about the generally arthropoda. So when they ask you generally about arthropoda, you are going to tell them the arthropoda characters. And when they ask you about insects, then you are going to tell them the insects characters. What are the characteristics of the insects? So the body of the insects are divided into 3 regions. That is the head, thorax, and abdomen. We discussed that earlier in detail. Okay, they have 3 pairs of legs. They have 3 pairs of legs, jointed legs. They have 2 pairs of wings. The wings are basically used for flying. The legs are used for walking and for grabbing and sitting on something. Okay, they have 2 prominent sensory antennae and present on their head. There are antennae present on their head, which are their sensitive organs. Okay, they have special type of mouth parts according to their mode of feeding. Okay, so for example, insects normally eat different things. Like for example, when we come toward the mosquitoes or the house flies, they suck blood. So they have another kind of blood sucker present in them, which suck blood out of animals and human beings. On the other hand, butterfly, they suck nectar from the flower. So they have another kind of you can say mouth part. Cockroach on the other hand can eat everything, so it has another kind of mouth part. So their mouth part are modified especially according to their food mode of feeding. So organisms which feed differently normally have different kinds of mouth parts in their body, which allow them to feed their bodies and their themselves. Now they show the process of metamorphosis. It is very much important. We will discuss metamorphosis, but insects show metamorphosis. The examples of insects are mosquito, housefly, cockroach, butterfly, and many more in the surrounding. You can see the insects. They are all the examples of insects. Okay, the term metamorphosis. We are going to discuss what is metamorphosis first, and after that I will take your questions. Okay, let's discuss what is metamorphosis. It is very much important question. A question asked in the exam is define metamorphosis and explain its types with examples. So this is metamorphosis. Okay, metamorphosis is basically the change in shape and form of an animal during its development from egg to adult one. Okay, like for example, when the eggs are laid down, after that the eggs are passed from different stages, and when they pass from different stages, they are converted into an adult one. So metamorphosis is basically the change in the shape and form of an animal during its development from an egg to adult form. So जब तक वो adult नहीं बनते, egg से लेकर adult तक जितनी भी changes उसके अंदर आती है, that changes are known as metamorphosis. Now, metamorphosis are of 2 types. Either it may be complete metamorphosis or it can be incomplete metamorphosis. Okay, so complete metamorphosis is completed in 4 stages. There are 4 stages in complete metamorphosis. The first stage is egg, the second stage is larva, the third stage is pupa, and the 4th stage is adult one. So when an adult lay an egg, the egg after some days converted into a worm that is called larva. Okay, the larva then converts into a shell. That shell is known as pupa, and the pupa then open up and it creates an adult one. Okay, like for example, butterfly. So in butterfly, you know, when the eggs are laid, after that caterpillars are formed. The caterpillar are the larva, and from that caterpillar a shell is formed. That shell is the pupa, and then from that shell an adult butterfly is coming out. So this is how the 4 stages of metamorphosis and complete metamorphosis, you can say. These are the 4 stages: egg, larva, pupa, and adult. The example is butterfly, the example is housefly, the example is mosquito. These all are the examples of complete metamorphosis. Okay, then comes to the incomplete metamorphosis. The incomplete metamorphosis it's normally takes 3 stages. Yes.
बेटा आपकी आवाज कट रही, आपकी आवाज कट रही है बेटा। बेटा आप चैट पे लिख दे, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है, आपके नेट का प्रॉब्लम है। क्या सबको मेरी आवाज नहीं आ रही है, सिर्फ अरीशा को मसला है? नहीं सर, आपकी आवाज आ रही है। बेटा अरीशा आपके नेट का प्रॉब्लम है, आज आपकी आवाज मुझे भी नहीं आ रही है। Some of the students may have the problem in the internet. Okay, so follow it up, inshallah. Okay, so we were discussing about the incomplete metamorphosis. So the incomplete metamorphosis completes in 3 stages. The first stage is the egg, the second stage is nymph, and the third stage is adult. So what is a nymph? A nymph is basically a miniature adult, means it resembles its parent. ओके, एग से डायरेक्टली एक एनिमल निकलता है और वो एनिमल अपने एडल्ट को रिजेंबल करता है, उसको हम निम्फ कहते हैं। ठीक है, निम्फ और एडल्ट में डिफरेंस ये होता है कि निम्फ में विंग्स नहीं होते और एडल्ट में विंग्स प्रेजेंट होते हैं, अदरवाइज दे आर सिमिलर। द साइज इज स्मॉल, निम्फ का स्मॉल साइज होता है, एडल्ट का साइज बड़ा होता है, लेकिन बाकी ये रिजेंबल करते हैं। और इसके एग्जांपल में आपके पास कॉकरोच आता है, ग्रॉस सुपर आता है। मैं आपको इसकी डायग्राम्स दिखाता हूँ। ये जो आपको नजर आ रहा है ये वाला, ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है। ठीक है, एग है यहाँ पर, यहाँ लार्वा है, प्यूपा है, एक शेल बन गया। ये एक वर्म टाइप का है, लार्वा कहलाता है, इससे एक शेल बन गया, ये शेल प्यूपा कहलाता है, और इस शेल में से एडल्ट बनता है। ठीक है जी, और यहाँ पर देखें आपके पास एग है, एग से क्या बना है, निम्फ बना है। दिस इज निम्फ, दिस बोथ आर द निम्फ। ओके, ये निम्फ एक स्टेज है, निम्फ है, और फिर उसके बाद ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सो निम्फ में और एडल्ट में डिफरेंस ये होता है, एक तो साइज का डिफरेंस होता है, निम्फ छोटा होता है, एडल्ट बड़ा होता है। दूसरा विंग्स, निम्फ में विंग्स नहीं होते और एडल्ट में विंग्स प्रेजेंट होते हैं। So these are the differences present between the nymph and adult. This is complete metamorphosis and this is incomplete metamorphosis. Okay, now I'm coming to the screen. If you have any question, you can ask now. अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं। If you have any question, ask the question right now. Pupa is basically a shell. Okay, it's a shell, hard shell. So you must have seen the shell of butterfly, the shell of other animals. Okay, so those are the shells. Metamorphosis is a change that occurs right from the egg to an adult. Okay, right from the egg to an adult. With the stages are basically the process of these changes is called metamorphosis. Prominent. Aisha Sif, what are you asking? I can't understand your question. Metamorphosis is not only related to insects. Okay, metamorphosis can be seen in amphibians as well and many other organisms as well. But precisely when we say about insects, so insects have this quality that they have the process of metamorphosis. Sensory antenna are two outgrowths present on their head. इंसेक्ट्स को देखेंगे आप तो इंसेक्ट्स के हेड्स के ऊपर दो इस तरह से एंटीना लगे हुए होते हैं। ये जो एंटीनास होते हैं ये इनके सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं, इससे सेंसिटिविटी करते हैं। Invertebrates have both kind of reproduction. Some have asexual, some have sexual. Yes, the caterpillar changes into pupa. Okay. मेटामॉर्फोसिस डेफिनेटली ह्यूमंस में भी आता है, लेकिन ह्यूमंस का प्रोसेस डिफरेंट है। ठीक है, वो जो चेंजेस होती है ना, वो चेंजेस आती है हर ऑर्गेनिज्म के अंदर आती है। एनी अदर क्वेश्चन?
Clear? Okay, to be vigilant, I will ask some questions. Okay, I'm taking another topic right now, and after that, I'm going to ask you some questions as well. So, इसलिए Sir? आपने बोल जी. Sir, but why there were two pictures of the nymphs? वो तो आपको समझाने के लिए कि initially it is a small one and slowly and gradually it becomes bigger one. So nymph is basically one stage. Okay, early nymph, later nymph, but nymph is one stage of the reproduction, or you can say development. Okay, when the young one is basically produced, that young one is called a nymph. So after it becomes adult, okay, the adult is basically then the animal itself. So there is some difference between the both of them, the adult and the nymph. Nymph will have, you can say, they do not have the wings in them. Their size is smaller. The adult has wing, and the size is big. Okay. Sir, so how can like the creatures can be made directly out of the egg? The creatures are created directly from egg. How can they created be? भाई देखें, आप जब एक लेट्स सपोज वी हैव अ hen, ओके, एंड हम उनके एग्स जो है वो रखते हैं फॉर इंक्यूबेशन. So after it become hot and it become fertilized, they become basically the young one is basically produced inside the egg. When the egg is broken down, the young one is coming out of it. It's a simple process of reproduction. रिप्रोडक्शन में जो है वो एग ही इन्वॉल्व होता है कि एग जो है वो उसी में यंग वन प्रोड्यूस होता है और फिर उसमें से आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा होता है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर हो चाहे वो किसी और एनिमल के अंदर हो. सर तो टेम्परेचर इफेक्ट करता है? डेफिनेटली टेम्परेचर इफेक्ट करता है, इसलिए तो उनको जो जो यू कैन से दैट कि जो हॉट एरियाज होते हैं या जो जहाँ पर हीट होती है उन जगहों में इंक्यूबेशन ज्यादा होती है. उनको हीट की जरूरत होती है, टेम्परेचर की जरूरत होती है. ठीक है जी. सर जैसे आपने बताया मेटामॉर्फोसिस की एग्जांपल्स को एक उसकी दो टाइप्स होती है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट. तो सर जैसे मेटामॉर्फोसिस की जो एग्जांपल है तो सर वो ह्यूमन बीइंग में कैसे प्लेस करती है, मतलब वो कैसे होती है ह्यूमन बीइंग में? ह्यूमन बीइंग में कैसे होती है? यस सर. ह्यूमन बीइंग में it's not like larva and pupa in human body. बेटा human body जो है बहुत ही advanced body है, and that advanced body initially it start from a cell. ओके, एक सेल जो है, एक पेरेंट सेल में एक जो है एक सेल जो है वो आता है मदर बॉडी से, एक सेल आता है फादर की बॉडी से. दे मिक्स टुगेदर एंड आफ्टर मिक्सिंग इट फॉर्म्स अ zygote. The zygote then slowly and gradually converts into embryo. The embryo then converts into a small, you can say, living organism, and there slowly that living organism grows up. So there is a difference, a huge difference between insects and human beings. Human beings have a complex body. Insects do not have that complex body. Okay, normally yes, every insect have the antenna present on their head. They are sensitive organ, and some it can be bigger and the other it can be smaller. Clear now? Okay. Now, sir, so the जी पूछिए क्या? Sir, the antennas present on the insects, they help to detect the surroundings. Yes, definitely sensitivity. ठीक है, तो they are sensitive. Definitely they are sensitive कि उनको अटैक कर रहा है, ठीक है, उनको कोई जैसे कोई उनका कोई प्रे है कुछ है तो उनके उन सेंसिटिव ऑर्गन्स की वजह से उन चीजों को डिटेक्ट करते हैं. Okay, let's see the next one now. Now we are having a next phylum, that is phylum Mollusca. Okay, Mollusca is basically derived from a Latin word, and Mollusca means soft-bodied. Okay, so animals present in this phylum are soft-bodied animals. Okay, they have soft and fleshy body. Fleshy mean the body which is made up of meat. Okay, so they have soft and fleshy bodies. Okay, bodies are enclosed in a thin fleshy cover. So upon the body there is a small thin cover present which made up flesh, which is made up of meat, and that fleshy cover is known as mantle. Okay, mantle is made up of meat. Okay, it's muscles present above the body, covering the body.
They have a hard non-living shell as well, and that non-living shell is made up of calcium carbonate. But this shell is not present in all the mollusks. Okay, they are not present in all the mollusks. In some of the mollusks, this shell is present. In other, this shell is not present. So this shell is normally made up of कैल्शियम कार्बोनेट. अगेन कैल्शियम कार्बोनेट किसे कहते हैं? चूने के पत्थर को कहते हैं. जो चूना होता है उससे ये बना हुआ होता है. ठीक है. दे ऑन द लोअर सरफेस and the ventral side, the lower side, a fleshy organ is present. Again, an organ made up of meat is present, that is called foot, and that foot is used for locomotion, means for movement from one place to another place. So that organ is used, that is used at the lower surface. Okay, they can be found in water and can found in moist habitat. I mean, the places where there is moisture, they can be found over there, and either they can be found in fresh water or in marine water. Some of them are marine water, other are fresh water. Okay, and you can see the most common one of them is the garden snail. तो garden snail आप लोगों ने gardens में देखा होगा, जो बरसात के मौसम होते हैं उनके अंदर जब हमारे पास जो है moisture आ जाता है तो ये snail garden के अंदर present होते हैं. And that is the example of mollusca, and you must have seen a shell on their bodies as well. ठीक है, एक शेल भी प्रेजेंट होता है उनके बॉडी के ऊपर. उस शेल को जो है वो शेल जो इनका है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है. इसी तरीके से आप समंदर के किनारे पर जब जाते हो यू मस्ट हैव सीन अ लॉट ऑफ शेल्स ओवर देयर, और आप कलेक्ट भी करते हो, उसमें से बहुत सारी ज्वेलरीज भी बनाते हो. ऑल दोस शेल्स आर बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम मोलस्का because the bodies of mollusca have these shells present on them, and when their size become increased, or you can say the size become big, so the shells are basically, you can say they are thrown out, and then they are coming towards the beach of the sea where you can find them easily, जहाँ आप उसको easily देख सकते हो, उसको ज्वेलरीज वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हो, की चेन्स बनाए जाते हैं उसमें से. ठीक है, दूसरे ज्वेलरीज के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, ऑर्नामेंटल पर्पसेस के लिए इन शेल्स को इस्तेमाल किया जाता है. तो स्नेल सबसे कॉमन एग्जांपल है. ऑक्टोपस है, मोसेल्स है, ऑस्टियोपर्ल है. ऑक्टोपस इज द लार्जेस्ट इनवर्टेब्रेट. ओके, सबसे बड़ा जो इनवर्टेब्रेट है वो ऑक्टोपस है. इसका साइज बहुत बड़ा हो सकता है और ये समंदर के पानी के अंदर प्रेजेंट होता है. तो ऑक्टोपस जो है इज द बिगेस्ट इनवर्टेब्रेट. द बॉडी इज कंप्लीटली मेड अप ऑफ फ्लैश. ओके, ऑस्टियोपर्ल जो है ना, ये जो ऑर्गेनिज्म है, ऑस्टियोपर्ल के अंदर जो मोतियां होती है, पर्ल जो होता है वो इसकी शेल के अंदर प्रेजेंट होता है. तो जो समंदरों में से लोग मोतियां निकालते हैं, वो मोतियां किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं? वो इस ऑस्टियोपर्ल के शेल में प्रेजेंट होती है, वहां से इन मोतियों को निकाला जाता है. सो मोलस्का इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू कैन से, फाइलम where we can find lots of animals who have soft and fleshy bodies. Okay, their body is covered by mantle, and a hard shell is also present, that is made up of calcium carbonate. It's a non-living shell. As the size of the organism grows, the shell is basically thrown out and new shell is formed. Okay, a fleshy organ for movement is present. That fleshy organ is known as foot. It is present on the lower surface, from with the help of which they can creep and move. Okay, they can be found in water or in moist habitat. Mostly you can see them in fresh water or in marine water. Examples are snail, octopus, mussel, osteopearl. These are some of the examples of phylum Mollusca. Okay, now if there is any question, again you can ask the question now. Sir? Yes. सर, ये जो इन्वर्टेब्रेट्स होते हैं उनमें एक भी बोन नहीं होती है, सिर्फ बैकबोन नहीं होती है? कुछ भी नहीं होता, इनमें बोन्स नहीं होते. इनमें नॉन लिविंग शेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं जो उनके बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं, but they do not have bones in them. Yes, oysters like scallops. Okay, so they basically inside the shell the small pearl is present, जो कि कीमती पत्थर होते हैं, मोतिया जिसे हम कहते हैं, वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. ऑक्टोपस के जो विंग्स होते हैं, वो जो आर्म्स होते हैं, वो इनके फुट तो होते हैं, वो इनके टेंटिकल्स जो होते हैं जिससे वो मूव कर रहा होता है. यस, द फुट्स कहते हैं. वेंट्रल साइड मीन ये आपका हाथ है. ठीक है, तो हाथ का जो ऊपर वाला साइड है ये डोर्सल साइड है, और जो नीचे सरफेस है ये वेंट्रल है. तो यहाँ नीचे वाले सरफेस पे जो है वो फ्लैश प्रेजेंट होता है जिसको फुट कहते हैं, और उसके थ्रू ये मूव करते हैं. Yes, any other question? Sir, I was asking that invertebrates में अगर कोई bones नहीं होती तो सर उन्हें क्या, उन्हें वो कैसे मिलती है? जैसे हमारी तो bones होती हैं तो हमारा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है. तो उनके स्ट्रक्चर में बोन्स नहीं होते. करती है.
इनके स्ट्रक्चर में देखो, स्केलेटन सिर्फ बोन्स के नहीं होते, ठीक है। स्केलेटन 3 टाइप के होते हैं। एक स्केलेटन जो है वो बोन्स से बना हुआ होता है, जो हमारी बॉडी के या वर्टिब्रेट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। दैट स्केलेटन इज नोन एज एंडोस्केलेटन, ठीक है। Second type of skeleton is a kind of skeleton which is present above the body surface. Above the body surface, it is a non-living structure. उसको हम कहते हैं exoskeleton. वो बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है, वो भी स्ट्रक्चर बनाता है। And the third type of skeleton is known as hydrostatic skeleton. Hydrostatic skeleton means skeleton made up of fluids. So ये बेसिकली फ्लूइड्स से भरे हुए होते हैं, और वो फ्लूइड्स जो होते हैं वो इनकी बॉडी को एक शेप प्रोवाइड कर रहे होते हैं। क्लियर सर? सर, ये जो ह्यूमन की जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है फ्रॉम बेबी टू एडल्ट, इसको हम मेटामॉर्फोसिस कह सकते हैं? बेटा देखो, ये आपकी डेवलपमेंट, बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस ही एक तरीका इसका है, आप डेवलपमेंटल स्टेजेस कहते हो, लेकिन खासकर जो टर्म मेटामॉर्फोसिस हम इस्तेमाल करते हैं, ये हम लोअर एनिमल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, इंसेक्ट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग्स के अंदर जो है फिर डेवलपमेंट आती है, हम उसको एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। सो वो एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स चेंजेस आती हैं, वो हमारे अंदर हो रही होती है, रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है वो। मोसेल इज आल्सो काइंड ऑफ, यू विल सी, आप जो है नेट पे भी डाल दीजिएगा मोसेल, यू विल फाइंड अ शेल लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एक शेल होता है, छोटा सा ऑर्गेनिज्म है मोसेल जो है, वो भी स्नेल की तरह शेल होता है, लेकिन स्नेल थोड़ा सा जो है उसके अंदर फ्लैशी ऑर्गन ज्यादा होते हैं, और मोसेल्स के अंदर ये ऑर्गन बहुत कम होते हैं। जी, द शेल ऑफ स्नेल इज नोन एज एक्सोस्केलेटन, वो एक्सोस्केलेटन है, ठीक है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है। सर आपने कहा था ये जो फाइलम की ये जो है क्या है इसका? मोलस्का। तो सर वो क्या कहते हैं, इनमें वो होती है जैसे रिप्रोडक्शन? सब में होती है रिप्रोडक्शन बेटा, एनिमल्स है, एनिमल में रिप्रोडक्शन नहीं होगी क्या? डिफरेंट काइंड के रिप्रोडक्शन है। चैप्टर नंबर 15 में आप ना मल्टीपल टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ोगे, तो जब आप चैप्टर नंबर 15 के अंदर रिप्रोडक्शन के बहुत सारे टाइप्स पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से एनिमल्स के अंदर कौन सी टाइप की रिप्रोडक्शन जो है वो टेक प्लेस करती है। यस, फ्लूइड अंदर इनके बॉडी के अंदर जो है, इनके बॉडी के अंदर वो फ्लूइड बनता रहता है, एंड उसकी वजह से इनकी बॉडी को शेप मिलती है। क्लियर? हाँ सर जी। सर, ये जो प्लांट सीड होती है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है? कौन सी? प्लांट सीड, जो प्लांट की जो सीड होती है। जी बिल्कुल, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। उस चीजें तो प्लांट, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे तो वो जिंदा चीजें कैसे ग्रो करेगी? प्लांट उसमें से कैसे निकलेंगे? Yes, all the shells are made up of calcium carbonate. Okay, now let's move to the last topic of this chapter. जी जी पूछे। सर मतलब कहते हैं कि जो कॉकरोचेस होते हैं वो अपने सर के बगैर भी रह सकते हैं कुछ देर के लिए, तो वो एंटीनास की वजह से होता है उनकी? कौन? कॉकरोचेस के वो अपने सर के बगैर रह सकते हैं, तो मैंने भी एक्सपेरिमेंट किया है कि वो थोड़ी देर तक सर के बगैर रह सकते हैं, तो वो थोड़ी देर बेटा, थोड़ी देर सर के बगैर कोई भी ऑर्गेनिज्म रह सकता है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए कोई भी ऑर्गेनिज्म, जाहिर सी बात है, बॉडी के अंदर पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे सेंसिटिव ऑर्गन्स है, सो आप फॉर सम टाइम दे कैन सर्वाइव। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स तो ऐसे भी होते हैं कि उनकी बॉडी का एक पार्ट आप हटा दें, आप उसका एक हेड हटा दे, कोई पार्ट हटा दे, तो लॉन्गर टाइम तक भी सर्वाइव करते हैं। सो वो उनकी बॉडी के अंदर अल्लाह ने वो सलाहियत रखी होती है कि दे कैन सर्वाइव फॉर दैट मच लॉन्गर, दे हैव द सेंसिटिव ऑर्गन्स प्रेजेंट इन देम, ठीक है। तो उसकी वजह से ये थोड़ा बहुत टाइम के लिए सर्वाइव करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि उसका कोई ऑर्गन जब खत्म हो जाए, कट जाए, तो वो दोबारा जनरेट भी करता है। सो दैट इज अनदर थिंग, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। नाउ द लास्ट फाइलम वी आर डिस्कसिंग टुडे इज फाइलम एचिनोडर्मेटा। ओके, एचिनोडर्मेट्स, the word echinodermates mean they have rough and spiny skin.
Echinoderm mean rough and spiny. So phylum Echinodermata are the animals which have rough and spiny skins. Their body is rough and they have spines on them. कांटे होते हैं body के ऊपर, ठीक है. They are exclusively marine. भाई देखो, एक्सक्लूसिवली मैरीन का मतलब होता है कि ये ऑर्गेनिज्म जो है सिर्फ और सिर्फ सी वाटर में रह सकते हैं, ये फ्रेश वाटर में नहीं रह सकते. So they are exclusively marine. Only and only you will find them in marine water. You cannot find these animals in fresh water. They have rough and spiny skin. Okay. They are pentamerous. Pentamerous का मतलब होता है having 5 arms. यानी 5 sides होते हैं. जैसे हमारे हाथ है ना, ये भी पेंटामेरस है. 5 उंगलियां हमारी हाथों में, पैर में, ये भी पेंटामेरस है. सिमिलरली एकाइनोडर्मेट्स के भी 5 आर्म्स होते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, पेंटामेरस कहते हैं. ओके. देयर बॉडी इज ट्रिप्लोब्लास्टिक. अब ट्रिप्लोब्लास्टिक मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था कि ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके बॉडी के 3 लिविंग लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. तो इनको ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं. एकाइनोडर्मेट भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं. They have a unique water vascular system. इनके अंदर ऐसा वाटर वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है जैसे प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है. ठीक है. अंदर ट्यूब्स प्रेजेंट होती है बॉडी के अंदर, और वाटर जो होता है वो इन ट्यूब्स के अंदर जो है वो सर्कुलेट करता है. ये सिस्टम किसी और एनिमल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ एकाइनोडर्मेट्स के अंदर प्रेजेंट होता है. ठीक है. अच्छा, मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस एनिमल्स आर दे डू नॉट हैव हेड, दे डू नॉट हैव आईज एंड दे डू नॉट हैव ब्रेन एज वेल. ना इनका हेड होता है, ना इनके आईज होती है, और ना इनका ब्रेन होता है. ओके. देयर बॉडी इज सेंसिटिव. इनकी बॉडी जो होती है, जो स्किन होती है, वो सेंसिटिव होती है. और इनके जो आर्म्स होते हैं, इन आर्म्स के जरिए क्या करते हैं, ये ग्लाइडिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं पानी के अंदर. ठीक है. सो दे हैव ट्यूब फीट फॉर लोकोमोशन. Their arms are known as tube feet. इनके आर्म्स को क्या कहते हैं, ट्यूब फीट कहते हैं. और ये ट्यूब फीट्स जो होते हैं, ये उनको ग्लाइड करवाने में हेल्प करते हैं, स्विम करने में हेल्प करते हैं. तो ये पानी के अंदर क्या करते हैं, लोकोमोट करते हैं. ओके. द एग्जांपल्स आर स्टारफिश, सी ऑर्चन, सैंड डॉलर, सी कुकम्बर एंड मेनी मोर एग्जांपल. जो कैन द मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज स्टारफिश. सबसे कॉमन एग्जांपल जो है वो इसकी स्टारफिश है. आप उसको देखोगे, इट अ स्टार लाइक ऑर्गेनिज्म हैविंग 5 आर्म्स. स्टार लाइक ऑर्गेनिज्म होता है, 5 आर्म्स होते हैं उनके. अगर खुदा ना करे किसी एक्सीडेंट की वजह से इसका एक आर्म कट जाए, तो ये उस आर्म को दोबारा जनरेट करता है, दोबारा से बनाता है उसको. ठीक है. तो इनमें रीजनरेशन की प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है. इज इट क्लियर? ओके. नाउ इज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क नाउ. ट्रिप्लोब्लास्टिक बेटा, ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है कि दे हैव 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज. The outer is ectoderm, the middle is mesoderm, and the inner is endoderm. Tube feet means that the starfish को देखा है, starfish के जो arms होते हैं, वो arms इनके क्या कहलाते हैं, tube feet कहलाते हैं. और इन tube feet की वजह से ये move करते हैं. They have sensitivity in their skin. They have sensitivity in their skin. Okay, the nervous system is sensitive, present in the skin, but the brain is not developed. Brain नहीं होता इनके अंदर. They do not. Sir, sea urchin. ठीक है जी. सर, स्टारफिश के पास तो 5 आर्म्स होते हैं, लेकिन